कोई बता सकता है कल मैंने क्या क्या बताया था? कल बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था। ऑटोकेड क्या होता है, क्या क्या हम कर सकते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन के अंदर हम क्या क्या करते हैं, वर्जन्स के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर की जीयूआई टूल्स के बारे में मैंने कल बताया था। ओके, राइट। एंड देन यूनिट सेटअप के लिए मैंने बताया था, राइट। एंड देन लिमिट सेटअप के लिए मैंने बताया था। ओके। यस तो यस। अभी हम यही, ये सबसे पहले यही हमें हमेशा करना होता है। सबसे पहले हमें यूनिट सेटअप करना, UNITs करके आप यूनिट सेटअप करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। यूनिट देख लेना, आपका यूनिट बिल्कुल परफेक्टली सेटअप हो, डेसिमल में हो। ठीक है। एंड देन मिलीमीटर्स में हो। राइट। ठीक है। मिलीमीटर्स में आप कर सकते हो, राइट। एंड देन यहाँ पे एंगल्स डेसिमल डिग्रीज में हो, प्रिसीजन आपका सीओस हो, राइट। ओके। 1 मिनट रुकना। ओके। आफ्टर दिस मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? देन वी कैन सेट अप योर लिमिट्स, राइट। हाउ कैन वी सेट अप योर लिमिट्स? एंड आप पहले ये बता रहे कि लिमिट्स क्या होती है, व्हाट साइड टॉक अबाउट द लिमिट्स। लिमिट्स क्या होता है? आप बता सकते हो लिमिट्स क्या होता है? मैंने कल ही बताया था। ओके, या लिमिट्स कितने इज एरिया में योर काम इमेज। करने के, यस, प्लीज। कितने वर्क एरिया को डिसाइड करने के लिए। Yeah, this is your decide your work, how your work is. Okay, this is your imaging line, imaging order, where can you work it? Okay, because you have infinite space in your AutoCAD, right? आपके AutoCAD वर्कशीट में आपके पास क्या होता है, इन्फिनाइट स्पेस होता है। तो आपके पास एक स्पेसिफिक स्पेस है जिसके अंदर आप वर्क करोगे, एक सीट है जिसके अंदर आप वर्क करोगे, फिर आपके पास लिमिटेड एरियाज पे ही आपको काम करना है। सभी हर कहीं आपको वर्क नहीं करना है, राइट। तो नेक्स्ट वन व्हाट यू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द लिमिट्स। LIMITs is your right here, limits. And after that, first of all, starting value is your 0,0, मतलब लोअर लेफ्ट कॉर्नर आपका ओरिजिन होगा। ओके। एंड देन अपर राइट कॉर्नर आपका क्या होगा, जो भी आप साइज देने वाले हो, जैसे कि हमने A5 की साइज दे दी 297, है ना। देन यू एंटर, तो आपकी लिमिट्स होगी। आफ्टर दैट लिमिट्स के बाद हमें क्या करना होता है, जूम आउट। ओके। जो जूम आउट के लिए आप क्या करोगे, जेड एंटर, एंड आफ्टर दैट A एंटर, राइट। ठीक है। तो आप क्या करो, जेड एंटर फॉर जूम, एंड देन A एंटर फॉर जूम ऑल द लिमिट एरिया, राइट। जस्ट क्लियर। ओके। तो ये आपके लिमिट एरिया जूम हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर लाइन आपको दिख रही है, राइट। तो ये आपके लिमिट एरिया, आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर करके मैं आपको यहाँ पे एक्स वाई पे पोजिशन दिखा दूँ, जिससे जो ओरिजिन पोजिशन, राइट। ओके। तो मैंने एक लिमिट एरिया सेटअप कर दिया, अब यहाँ पे मुझे वर्क स्टार्ट करना है। clear? अब मुझे ड्राइंग्स वगैरह बनानी सीखी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ड्राइंग्स को प्रिपेयर लेता हूँ। तो नेक्स्ट वन इज योर वांट टू शो योर ड्राइंग्स बाय दिस टाइप ऑफ थिंग। फर्स्ट, ओके। एंड देन जिनके पास फुल कोर्स है उनके पास ये वर्कशीट होगी, राइट। एंड देन ये नहीं आपने देखी है तो स्टूडेंट पैनल पे आप लॉग इन करके देख सकते हो, गो टू द स्टूडेंट पैनल एंड यू गॉट दिस चीज इन फॉर्म ऑफ PDF। ओके। एंड देन बोथ डज नॉट हैव, देन आई से इन दिस योर your WhatsApp group also। ओके, क्योंकि दो जो इंटेंसिव कोर्स वाले हैं उनके पास ये शीट नहीं होगी तो मैं उनको WhatsApp ग्रुप में शेयर करूँगा। तो अब मुझे ड्राइंग्स करनी है, तो ड्राइंग्स में हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओके। कोऑर्डिनेट्स, एनीवन नोज व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स? एनीवन नोज कोऑर्डिनेट्स? इसको पता है कोऑर्डिनेट्स के बारे में, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स? आपको पता है कोऑर्डिनेट्स? देवांश, मोहित, विजय, कुशाल, एनीवन नोज व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स? ओके, कोऑर्डिनेट्स, दिस इज specify your points location, your points location,
right? This is called coordinates. Points location in your plane. Which plane you use? Suppose you use XY plane for 2D, and then if you use XYZ plane for 3D. Which one plane you use? This coordinates value shows which plane you have the specific location, right? यही होता है coordinates. Yes या no? तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, this is this is my graph, right? And then I place this line right here, straight line. And suppose this is your XY plane, okay? This is my X, okay? This is my X, and this is my Y, right? And then you specify any point. Suppose here you want to make a rectangle, right? मैंने यहाँ पे एक rectangle बना दिया. This is rectangle. तो इनकी कोई points होगी. ये points किसी न किसी value, किसी न किसी base पे होगा, right? ये किसी न किसी base पे होगा. Okay? इसकी कोई ना कोई इस points की कोई ना कोई specific location होगी in XY plane पे. And then this is done. Okay? ये सारी चीजें आपने बनाई होगी स्कूल के अंदर, right? स्कूल के अंदर ग्राफ सभी ने बनाया. Okay? All have done the graph. Draw the graph, right? या मैं मान के चल सकता हूँ. This have the location is 2, 1, okay, and this point have the location is suppose is 5, 1, and this have the location is your suppose is 5, 4, and this have the location is your position point for location is your uh, 2, 5, okay. Okay, we have tried the completely 5, 1. Here we have the 2, 5, and then here we have the 4, 5, right? Next point 5, 4. ये भी एक्सरसाइज प्लान करें. Here 5, 1. Okay, and then here. Okay, this one. Okay, this is your points, right? Which points is shows XY points. Okay, X value is 2 and then Y value is 1. In this case, X value is changed to 5 and then Y value is 1. And then in this case, we have the X value is 5 because here this points is value is 5 and this value is 4. Okay, and then in this case, we have the Y value is 4, okay, not 5, okay, and then X value is 2 because here this point is your 2, right? तो यही स्पेसिफिक पोजीशन आप जो बताते हो, ये पॉइंट्स जो आप बता रहे हो, इसकी जो लोकेशन आपने बताई, दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स, राइट? इसके प्लेन के अकॉर्डिंग, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग. क्लियर? यस, क्लियर? आपको समझ में? तो दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स. और इसमें अगर आप बात करो तो लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप अपने मैप में कोई स्पेसिफिक लोकेशन आप फाइंड आउट कर पाते हो, राइट? अगर आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिल जाता है तो वो भी एक्स वाई के प्लेन पे आप फाइंड आउट कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स. समझ में आया कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ऐसे है ना? Yes, understand. Okay, that's good. Next one is used is your coordinates, types of coordinate system. Okay. Which types of coordinate system? Also says the Cartesian system. First of all is absolute coordinate system. What's your first of all is absolute coordinate system, and then in the short form we call it ACS. Second one is your relative coordinate system. Okay. And then in short form we say it RCS. And third one is your polar coordinate system. And this is shows PCS, right? At first point, what is absolute coordinate system? Show the absolute position
at the XY plane. Okay, XY plane. Absolute position of what? Absolute position of points. Okay, which points? This जो करोगे चीजें, right? Here we have the example is absolute position. This is shows the absolute position. This point is your absolute position x and y, right? And then how can we write the value in form of x and y? Okay. First of all, write the x value, and then second of write your y value. That's clear. अब इसी की वजह से एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से हम क्या करेंगे, इन तरह की ड्राइंग्स को हम बनाएंगे. ओके, बाय यूज ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम आई ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ड्राइंग्स. दैट्स क्लियर. So this, check this one. तो चलिए आगे. ओके, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले मैं बात करूंगा लाइन. व्हाट इज लाइन? एनीवन नोज व्हाट इज लाइन? लाइन क्या है, तो बता सकते हो व्हाट इज लाइन? One point to another point on. या राइट, वन पॉइंट जॉइन टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन. वन पॉइंट join another point is called line, right? फॉर लाइन आप इसके लिए क्या शॉर्टकट यूज करोगे? एल. ठीक है, आपके पास एल ऑप्शन है लाइन के लिए. ठीक है, तो एल लाइन के लिए यूज होगा. तो आपको करना क्या है, आपको अपने ऑटोकैड पे आना. जस्ट कम टू द ऑटोकैड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज ऑल द ऑप्शन. यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको दिखे, बस बस वन ऑप्शन यू वांट टू ओपन इज योर ग्रेड मोड ओनली. आफ्टर दैट ऑल ऑप्शन विल बी क्लोज. नॉट वांट टू एनी ऑप्शन आई वांट टू ओपन. ओके, तो जो भी आपके ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट आपके ओपन है, तो उन सभी ऑप्शन को आप ऑफ कर देना अभी के लिए, जब तक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क कर रहे हो. ओके, बिकॉज विदाउट दिस ऑप्शन यू हैव टू कंफ्यूज. ओके, तो इसलिए आप जितने भी ऑप्शन आपके अगर ऑन है तो वो सब ऑफ कर देना. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस ऑल ऑप्शन. आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू, हाउ टू डू द make your objects. Suppose I make this object, and then here this is my distance 150, right? आपके पास एक डिस्टेंस है 150, and then what, how can we do the make these points? First of all I find out the points. How to find out these points? Suppose here मैंने एक लाइन दी. This is my line. Okay, that's my line, and this is one line. Okay, at this start point we have the origin. Which origin is 0 comma 0, right? We have the origin point is 0 comma 0, right? ये origin point है first of all. तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है इसके बीच में डिस्टेंस क्या आ रही है, 100 की डिस्टेंस आ रही है. तो नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू इज एक्स इन एक्स वाई पोजीशन. क्या हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग? व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट 100,0. वैल्यू? यस, 100,0. right, 100 comma 0. Okay, and then what's the position of the next point? Here we have the distance of right. Any idea what's the position of next point? 100,50. 100,50. Yeah, right, 100,50. And then after that, there what's the position of this point? Okay, because here we have the right 0,50. Okay, तो ये एब्सोल्यूट पोजीशन में यही होता है कि आपके एब्सोल्यूट पोजीशन बताता है हर पोजीशन, राइट, एक्स वाई पोजीशन पे. तो चलो हम बनाते हैं, कैसे बनाना है. हम तो जिस पार्ट फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लाइन यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो. क्लिक ऑन द लाइन इन दिस ऑप्शन, एंड देन आप कमांड लाइन पे भी जाके एल एंटर कर सकते हो. व्हाट यू डू, एल एंटर, enter in space for anything you can do.
First of all, I'll enter. After that, what you do? Specify first point. First point is your origin point. So then 0, comma 0. This is your 0, comma 0. And I hit the enter. What will we get? Here we got the first point at the position of origin. Right? Okay. The next point I want to place in this point. Right? Then what we do? Specify next point is 100, comma 0. Right? And then we add the enter. Then what we got? Here we got the next point and then we draw the one single line. Clear? फिर हम आगे क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज योर इस इन दिस डायरेक्शन वी गॉट अ 50 वैल्यू नेक्स्ट पॉइंट इज योर 100 comma 0 50 right and this is your for next point and then again मुझे इस डायरेक्शन में एक पॉइंट चाहिए इस पॉइंट पे जहाँ पे आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 एंड देन y की वैल्यू हो जाएगी आपकी जो वैल्यू आपकी एक्चुअल है तो क्या है 0 comma 50 right and then hit the enter so we got this and after that we want to close this line then use the C enter so close C enter तो आपके पास क्या आ जाएगा ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा राइट मैंने किससे बनाया एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से राइट so how can we do that first of all L for line what you do L and then enter okay enter space for anything you can use it दोनों आपका सेम ही वर्क करता है आफ्टर दैट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट इज योर ओरिजिन so what you write here is 0 comma 0 is origin point right and then again what you do specify next point next point is 0 100 comma 0 okay then again next point next point is 0 100 comma 50 and again next point specify next point is 0 0 comma 50 right and after that what you do so close the object okay what you do C enter okay and then your object will be made clear समझ में तो इस तरह से आप क्या करोगे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से आप यहाँ पे एक ड्राइंग क्रिएट करोगे राइट जैसे हम सिंपल है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने जो बताया एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ पॉइंट एट एक्सवाई प्लेन ठीक है एक्सवाई प्लेन के आपके ऊपर एब्सोल्यूट पोजीशन आपको बताता है दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर तो आपको करना कुछ नहीं सिलेक्ट दिस लाइन ओके यहाँ से आप क्लिक करना है देन सिलेक्ट ऑल ऑप्शन एंड देन आप यू वांट टू इरेज ई एंटर कर दो ई एंटर करके आपकी ये ड्राइंग क्या हो जाएगी इरेज हो जाएगी इफ यू नॉट नीड इट इफ यू नीड इट देन एम एंटर एंड देन इसको उठा के कहीं हो जाएगा ओके मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट को मुझे रखना है फॉर इरेज सिलेक्ट ड्राइंग ओके एंड ई एंटर ओके तो आपके पास इरेज के लिए ई एंटर फॉर मूव सेलेक्ट ड्राइंग एंड एम एंटर करने के बाद आप क्या करोगे मूव हो मूव इट ओके तो उसको मूव करेंगे एम एंटर एंड आफ्टर दैट मूव द ऑब्जेक्ट राइट तो अगर इन केस आपको ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करना है आपको अलग पोजीशन पे रखना है ताकि आप दूसरी ऑब्जेक्ट को आप ये स्टार्ट कर सको तो इसके लिए आप मूव का कमांड यूज करते हो बाकी चीजें इसमें और भी चीजें जो कि हम डिटेल में बाद में देखेंगे कमांड्स करते हैं ओके आज सिंपली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे क्लियर ओके देन व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज हियर मैं नेक्स्ट पार्ट आपको बना के दिखा देता हूँ इस वन एग्जांपल आल्सो आई टेक इट फॉर दिस सेक्शन आई टेक दिस वन ओके दिस इज योर हार्ड डिस्क वन राइट ठीक है तो आप अब आप लोग बताएंगे इसके अंदर कि
नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या हो सकता है, ओरिजिन पॉइंट मेरे पास है, राइट। अब इसकी ड्राइंग को हमें बनाना है, क्रिएट करना है। जस्ट क्लियर। तो आ जाते हैं, क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास ड्राइंग है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपके पास ड्राइंग विजिबल है। दिस इज योर ड्राइंग, राइट। ओके। अब मैं इसे फर्स्ट ऑफ स्टार्ट दिस पॉइंट, आप सभी को विजिबल है, राइट। तो I'll enter first, okay, and start position is your origin, right? Enter, and then what's the next position value? नेक्स्ट पोजीशन वैल्यू क्या होगी आपके अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग, प्लीज टेल मी। ड्राइंग सभी को नजर आ रहा है? व्हाट्स द नेक्स्ट पोजीशन वैल्यू, एनीवन टेल मी। 100,0. 100,0, राइट। 100,0, 100,0, okay. And then what's the next point value? 100,20. 100 or 100,20, 20. okay. And then what's the next point value? What's the 20, next point value? 20. 20, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कई लोगों को कंफ्यूजन होगी। मैनी ऑफ देम हैव कंफ्यूजन, राइट। देख सकते हो यहाँ बैक साइड में 20 ज्यादा है, राइट। इफ यू गो टू बैक साइड ऑफ योर वैल्यू, देन व्हाट यू डू, जो आपके एक्चुअल वैल्यू है आपके पास जो 100 है, उससे आप क्या करो, जो बैक साइड में जा रही है उस वैल्यू से माइनस करो। 20, ओके। 0. तो क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू? 80 80 कोमा, comma 80,20, राइट। yes sir. यस या नो? 80, okay. राइट, दिस वैल्यू इज राइट और नॉट? हाँ या ना Right. तो बोलो। यस, राइट। ओके। so when we enter, this points will be met. अब what's the next point value? क्या हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू? 80 comma 40. 80,40, right. Okay. And then what's the next point value? Take 50,40, right? Okay. And then what's the next value? Next value क्या हो सकती है? What's the next value? 50 comma 90. Right. 50,9. 9. Okay. And then what's the next value? नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? आप बता सकते हो? देन अगर आप है ना बैकवर्ड की जगह फॉरवर्ड जा रहे हो तो आप एडिशन करोगे लास्ट वैल्यू से। लास्ट वैल्यू क्या है आपके पास? 40 और 50, राइट। एंड देन हाउ मेनी फॉरवर्ड द वैल्यू वी गॉट? 30। तो 50 प्लस 30, व्हाट्स योर वैल्यू गॉट? इज 80, राइट। 80 कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी इस केस में? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वाई? 90. 90, करेक्ट। ओके। एंड देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? 80 comma 110. Yeah, 80 comma 110. So 90 plus 20 is 112. Okay, and then after that, next point value is your 100 comma 110.
Yes, sir. Correct or not? 100, comma 100 comma 110 is correct or not? 100, comma 110. Yeah, right. Okay. And then after this, next value is yours. Hundred comma 130, right? Or Yes, not? sir. Yeah, that's Yes, correct. That's sir. right. And then after the next point value is next point की क्या value होगी? हम्म बताओ. 0, comma 140. 0,130. That's it. And after the next value is बताओ कुछ. 130 minus 25. How many values are there? 0,105. 105. 0, comma 115. Okay. And what's the value of next point? 30, comma 105. Right. 30,105. Okay. And then what's the next value? क्या होगा 30, नेक्स्ट comma वैल्यू? 25. 30,25. 25. Correct. Okay. And what's the next value is yours? 0, comma 0. 0, 0,01. comma 25. 0,25. That's correct. And after that, you want to close it, just see enter. ओके. तो आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, राइट? बिल्कुल ये वैसे ही ऑब्जेक्ट दिख रहा है जैसे वो आपके वर्कबुक के अंदर है. यस या नो? आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा हाउ टू यूज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम. क्लियर? और क्योंकि इसमें बचे हुए काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो सभी आपको बनाने हैं और आज ही बनाने हैं, कल के लिए नहीं छोड़ना है हमें कुछ भी, राइट? और स्पेस में जो भी है सारी चीजें हो जाएगा. कैन यू डन दिस ऑल द ऑप्शन ऑल द एग्जांपल्स? आपको समझ में आ गया? आपके पास वर्कबुक है? वर्कबुक मिल गया आपको? उसकी तो सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की ऑटोकैड के बारे में बताया. ओके. जस्ट के लिए हाउ टू यूज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके. तो अगर ये क्लियर है तो हम एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेते हैं, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? इसमें एक वर्ड है दिस नेम इज रिलेटिव. व्हाट्स द मीन ऑफ द रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब क्या है? व्हाट द मीन्स मीन ऑफ रिलेटिव? कोई बता सकते हैं रिलेटिव का मतलब क्या हो सकता है? एनीवन? रिलेटिव का मतलब तो पता ही होगा सभी को. एंड दिस टाइप ऑफ coordinate system is relate one point to another point. Okay.
या फिर हम कह सकते हैं 1.2 नेक्स्ट पॉइंट, से दिस आल्सो इज अ नेक्स्ट पॉइंट। इन दिस केस आपके पास जो भी पॉइंट्स होगी वो इससे से रिलेट करेगा। ओके, रिलेट 1.2 नेक्स्ट पॉइंट। हाउ टू 1.2 next point we will be relate, how to we write here? Just for this purpose, how can we write? Just use the at the rate first and then xy. Okay, suppose here अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, दिस इज योर एक्स वाई वैल्यू, राइट। ओके, एट द रेट सिंबल आपके रिलेटिव कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या सिंबल यूज करोगे? एट द रेट। आफ्टर दैट राइट द एक्स वैल्यू एंड देन कॉमा, देन अप्लाई द वाई वैल्यू। ओके, कैसे करना है ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं इसी का एग्जांपल दूंगा। ओके, यही वाला मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज एग्जांपल। अभी मैं इसकी वैल्यूज डालूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट्स दे आर, हाउ कैन यू टेक दिस वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस एग्जांपल, राइट। तो मैं इसी में एग्जाम आपको क्लियर कर देता हूँ। दिस यूजेस हाउ टू यूज द रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। We have this value, right? And then we have this value also, right? अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो हमें पता है कि दिस इज माय ओरिजिन पोजीशन, राइट। तो यहाँ पे तो मुझे कोई डाउट नहीं कि ये ओरिजिन पोजीशन है, दिस इज माय ओरिजिन पोजीशन, राइट। तो मैं यहाँ पे ओरिजिन पोजीशन भी लूंगा 0,0। ओके, राइट। तो स्टार्टिंग में मुझे एट द रेट या लोगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन दिस केस दिस पॉइंट इज रिलेट टू दिस पॉइंट। ओके, तो इस केस में आप क्या लिखोगे? इस केस में लिखोगे आप एट द रेट 100,0। ओके, फर्स्ट राइट हियर इज 100,0। ओके, इन दिस केस में। ओके, आफ्टर दिस फॉर दिस पोजीशन, ओके, ये इस पोजीशन के लिए ये पॉइंट रिलेटेड हो जाएगा एंड दिस पॉइंट इज योर कॉल्ड एज अ ओरिजिन। ओके, तो इस केस के अंदर आप एट द रेट 0,50 सिर्फ जिस डायरेक्शन में आपने वैल्यू चेंज की है उसी डायरेक्शन की वैल्यू को आपको लिखना है, बाकी दूसरे डायरेक्शन की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। उसके केस में आप एट द रेट लगाने के बाद 0 लिख सकते हो। दिस वैल्यू इज एक्ट लाइक एज अ ओरिजिन फॉर दिस पॉइंट। ओके, this point is act like as a origin for this point. This why is called a relative point. Okay, this point is related to this point. That's why we call relative point. तो यहाँ पे क्या आएगा? 0,50, राइट। एंड आफ्टर दैट इन दिस केस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? एट द रेट। और ध्यान रखना हमारे पास जो वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इन दिस केस बैकवर्ड डायरेक्शन पे आपके पास जाए तो वैल्यू जो हो जाती है आपकी, जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या होगी? 0 हो जाए, माइनस हो जाएगी। एंड देन इन द केस नेक्स्ट पॉइंट इज आई आइडेंटिफाई एज द origin, and then origin point is of y is 0. That's why this point is called minus 100 comma 0, right? ओके, तो इस केस में रिलेटिव कोऑर्डिनेट की केस में आपके पास ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा? दिस इज योर -100,0। दैट्स क्लियर? समझ में आया कैसे पॉइंट्स हमें लेना है इसके अंदर? यस या नो? Yes, sir. ओके, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट्स को कुछ इस तरह से लिखूं, क्लियर होगा वेल। अगर मैं इस केस में पॉइंट्स लिखूं तो फर्स्ट पॉइंट इज जीरो, सपोज ये एट द रेट में लिख के दिया, एंड देन ये एट द रेट मैंने लिख दिया, एंड देन ये मैंने एट द रेट लिखा, मतलब इस केस में ये स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। एंड देन इन दिस केस आपके पास ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी एट द रेट -100,0। ओके, बाकी चीजें सेम, बस इसी में मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दी। एट द रेट यूज किया तो 100,0 एट द रेट 0,50 एंड देन आफ्टर दैट हम लोग एट द रेट -100,0। दिस पॉइंट विल बी फॉलो। चलो इसी पॉइंट को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आई वांट टू क्रिएट इज दिस पार्ट। ओके, दिस जो मैंने ये बनाया था वही मैं बनाऊंगा, ठीक है। सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट में, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आई मूव इट, एंड देन मैं इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो व्हाट आई डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंटर द एल लाइन, मैंने लाइन दिया एल एंटर, ठीक है। एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट हियर इज द ओरिजिन 0,0। First of all, write here is the origin. And if you don't want to write here is the origin, also you can click any point right here. Suppose here मैंने L enter किया,
जरूरी नहीं कि आप ओरिजिन ही हो, आप चाहो तो कहीं पे भी क्लिक भी कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट आपका बाय डिफॉल्ट ओरिजिन ही मान के चलेगा, भले ही आप ओरिजिन पे नहीं नहीं होते, बिल्कुल दिस इज कॉल्ड रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स। आफ्टर दैट चेंज इन द 100 डायरेक्शन, देन व्हाट यू डू, just write here as a at the rate in 100 and then your comma 0. This is your 100 position. एक straight line आपके यहाँ पर draw होगी, right? And after that, in this direction, we have the distance is 50. Then what we do? At the rate first, in this which direction is y direction. Just by in x direction is value is 0 and then in y direction you take a value is 50. तो यहाँ पर 50 के डायरेक्शन पे ये चेंज हो जाएगा, राइट? एंड देन अगेन इस डायरेक्शन पे आ जाओ, तो ये देखो कि आपके क्वाड्रेंट वन में एक्स की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, मगर जब आप क्वाड्रेंट सेकंड में आप जाते हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, राइट? तो इस केस में आपके पास डिस्टेंस तो 100 है, मगर वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, तो 100 माइनस 100 हो जाएगा, राइट? एंड देन कॉमा 0, राइट? तो मैंने 100 0 दिया, तो इस पोजीशन पे मेरे पास ये लाइन बन जाएगी। आफ्टर दैट यू एंटर सी एंटर, देन योर ऑब्जेक्ट विल बी क्लोज, राइट? समझ में आया? जैसे ना, चलो सेम एग्जांपल हम ले लेते हैं, जो कि मैंने अभी अभी ये बनाया, सेम थिंग हम बनाते हैं किसकी मदद से, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से। और आई होप आप सभी को रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में तो आ गया होगा, तो आप मुझे आप यहाँ पे पॉइंट्स बताओ, ओके? तो जस्ट टेक दिस एग्जांपल दिस फॉर दिस पार्ट, और मैंने यहाँ पे इसे यहाँ पे यूज करिए, और मैं बस इसी एग्जांपल को रिपीट कर रहा हूँ, ओके? मैं यहाँ पे एल एंटर ले लेता हूँ, एल एंटर लेके मैंने फर्स्ट पॉइंट को दे दिया, मैंने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू क्या हो सकती है आप लोगों के अकॉर्डिंग, प्लीज टेल मी नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू, इसकी नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, एनीवन टेल मी? कोई बता सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू? 100 0. एट द रेट 100 कॉमा 0, राइट? एंटर, तो आपकी फर्स्ट लाइन बन गई। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू इज, प्लीज आगे की वैल्यू बताइए। नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू क्या हो At the सकती है, प्लीज 100, टेल मी? at the 100 comma नोट है एब्सोल्यूट में यहाँ पे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो 0 कॉमा 20 आएगी, राइट? तो इस केस में ये वाला जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन हो जाएगा, सिर्फ चेंजेस वाई के डायरेक्शन में हो रही है, तो सिर्फ वाई के डायरेक्शन में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट? तो इस केस में क्या आएगा, एट द रेट 0 कॉमा 20, राइट? यस या नो? okay. ओके, एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू इज योर्स, नेक्स्ट पॉइंट की At वैल्यू क्या the होगी, minus माइनस at the minus 20 comma 20 कॉमा 0, right? Because in change in only x direction, not in y direction, right? And after the next value is your next value क्या होगी, minus नो हियर माइनस, बिकॉज at हम the स्ट्रेट लाइन minus में लेके जा रहे हैं, ठीक है? तो इस केस में माइनस नहीं होगा, और वाई डायरेक्शन में okay. मेरे पास जा रहा है, राइट? अगर अप साइड में At जा the रहे हो तो आपकी वाई 0 0 डायरेक्शन comma की 40. वैल्यू होगी पॉजिटिव, एंड देन डाउन साइड में जा रहे हो वाई डायरेक्शन के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव वैल्यू, राइट? तो अप साइड में जा रहे हो At the 0 comma एट द रेट 20. 0 कॉमा 20, यही होगा, राइट? यस या नो? Right. ओके, एंड देन नेक्स्ट वैल्यू इज योर्स, नेक्स्ट वैल्यू में ये पॉइंट आएगी, तो ये पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, एट द रेट नेक्स्ट पॉइंट वैल्यू इज क्या हो सकती है, At the 0 comma minus 30. -30 कॉमा 0, because change in x direction, that's why we put the value in x position, right? Enter, Okay. and next position value is, next point value is 0,90. 0 कॉमा 50, कितने की डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है, 50 की डिस्टेंस में, राइट? तो देन वी कैन राइट हियर इज अ 50 नॉट अ 90, एट द रेट
0,50. Okay. Next one is yours. Next position value is 30,0. yeah, right. 30,0. 0. And the next position value is 0,20. 0,20, right? Okay, and then what's the next position value? Minus 100,0. Right. At the 20 commas. At the 20,0, not a minus here. Okay, and then what's the next point value? 0,20. At the 0,20. 0,20, right? Okay, and then after the next value, Minus 100,0. minus 100,0. Okay, and then after the next value for next point value, 0, minus 25. yeah, right. 0, minus 25, because here we use Downside. downside. Okay, then next point values. Next point value is 30,0. 30,0. And then after that, next point value is 0, minus 80. 0, minus 60, right? Okay, and then after that, next point value is Minus 30,0. right, minus 30,0. Okay, and then C enter, right? Easily ये बन सकता है, yes या no? Okay, तो ये दो आपको मैंने आज बताया, ये दोनों से ही आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पे से आपको दिख रहा है. Okay. Okay, you have the this option also available in your this PDF is also available in your student panel. Okay, तो आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं ग्रुप में ये PDF शेयर कर दूंगा जिसमें आपकी एग्जांपल जो भी आपको सॉल्व करनी. ओके, व्हाट यू हैव टू डू, मुझे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट के एंड देन रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के क्या करोगे आप, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिस डायग्राम इन योर रफ बुक. ओके, योर बुक, your rough book, and then specify each and every point's value in the form of absolute coordinate system also, and in form of relative coordinate system also. And then after that, you can also make this thing by use of AutoCAD. Okay, तो मुझे AutoCAD की screenshot भी चाहिए. Take the screenshot of the part where we create the two types of things by use of the absolute coordinate system and by use of the relative coordinate system. And next one also, this diagram create your rough workbook, and then here what you do, specifies points value in form of absolute coordinate system, and then after that in form of relative coordinate system. तो हर points की आप वैल्यू यहाँ पे लिखोगे किसकी, जैसे कि 0,0 है, ये आपके पास 100,0 है, ये 100,50 है, एंड then ये दिस इज योर 0,50, राइट. तो इस तरह से आप हर पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे इन सभी डायग्राम के पास पेज के 1 2 3 4 5 6 6 पेज 6 डायग्राम है ओनली. अब आज ही करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे पास ये ग्रुप में सभी के फोटोज आ जाने चाहिए, राइट. टेस्ट के लिए व्हाट्स यू डन एज टुडे, क्योंकि आज की प्रैक्टिस आज ही करनी है, कल के लिए नहीं छोड़नी है हमें कहीं. कल के लिए कल वाली प्रैक्टिस करेंगे हम. ओके, दैट्स क्लियर. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? No. नो, ऑल क्लियर, दैट्स गुड. ठीक है, तो सभी के पास सॉफ्टवेयर